Bismillahirrahmanirrahim, and we are going to work on essay today. And this essay that we are going to work on today is the problems and the solutions essay category. Obesity is a serious problem in many countries, especially in the rich countries. So, what is the topic of the essay? It is the obesity, and what is the focus? It is the rich countries. Okay. So now obesity is a problem, and obesity means motapa is the topic of the essay, and especially in the rich countries, they are focusing. So topic kya hai? It is obesity, and what is the focus? Focus is the rich countries of the world. So means developed countries. For an example, we talk about USA, we talk about UK, we talk about Germany, we talk about France, जितने भी modern countries हैं उनकी बात हो रही है. Discuss the ways to solve the problem and provide specific reasons and examples to support your answer. So the first side means one side that we need to work on is the reasons behind the obesity, and the second thing that we have to work on is the solution to this problem. So the overall essay structure is like that. We have to work on obesity, topic obesity है, focus rich countries है, side one है इस problem की reasons, और step number 2 है problem के, या side number 2 है problem के solutions. So topic obesity, focus rich countries, side one is the reasons of obesity, and side number 2 is the solutions. जब भी हमने essay को solve करने, sir told you 4 things. Number 1, the first thing is that हमें identify करना है, identify the ideas. सबसे पहले हमें identify करना है हमारे ideas क्या हैं. We have to write down the ideas of ours. हम अपने ideas को लिखेंगे ideas. So ideas means हमारे ख्याल में क्या reasons हो सकती हैं obesity की. So ideas. So now idea number 1 क्या होगा, obesity की क्या reason है, and पहला हम लिखते हैं the first reason can be, हम सोचते हैं the first reason is the overconsumption. It is the overconsumption of the fast food or the fast food. Okay. So now what can be the impact of it? याद रखिएगा, कभी भी idea successful नहीं होएगा अगर हम अपने आइडिया का इम्पैक्ट साथ में लिखेंगे. मिसाल के तौर पे, if I say that fast food का over consumption is a big problem, if I write this point, if I do not write that is fast food से होगा क्या, so this point will be in vain. Okay, कभी भी एग्जाम में incomplete argument नहीं करना. So over consumption of fast food, and इससे होगा क्या, इससे over consumption से will increase calories level, और कैलोरीज के लेवल के बढ़ने से हम लिखेंगे कि this will lead to the obesity. Number 2, it is what the number 2 is the eating ready to eat cooked food. Okay, this will raise what? The oil level. This will raise the oil level. And obviously then we will write that this will lead to the obesity problem. Number 3, the third reason can be, हम सोचते हैं, it is because of the poor eating habits. And this moves to the poor digestion. Okay, the poor digestion, and the poor digestion then leads to the obesity problem. Number 4, lack of exercise. हम सोचते हैं 4 चीजें हो सकती हैं, and this lack of exercise is the poor burnout. Poor burnout means कि आपके जिस्म से जो आपकी जो जिस्म से एक्स्ट्रा जो कैलोरीज हैं या जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होता और उससे फैट होता है. एंड दीज कैन बी दी 4 आइडियाज एंड देयर इम्पैक्ट. हमने ये सोच लिया, ये था स्टेप नंबर 1 अगर आपको याद पड़ता हो. एंड दीज आर द आइडियाज फॉर साइड नंबर 1 मीन्स द रीजन. एंड देन अब हम लिखते हैं आइडियाज फॉर साइड नंबर 2 मीन्स सोल्यूशंस क्या होंगे. नंबर 1 हम कहते हैं controlled consumption of fast food, है ना. and then हम कहते हैं the second reason, the second one is हम कहते हैं कि reduction in cooked food usage. अच्छा जी, आगे चलिए. what can be, it is exercise
exercise inclusion in life. And then हम कहते हैं number four हम कहते हैं that government should take initiative, should take information initiative about the bads of obesity. तो हमने ये 4 solutions लिखे हैं. So now we are going to work on our introduction. पर introduction में सर ने आपको बताया हुआ है, जिनको नहीं पता है they can go on the Google and they can type that how to write the effective essay with Nishan. मैंने आपको वहाँ पे steps भी समझाए हैं, मैंने कैसे लिखा है इंट्रोडक्शन 5S फार्मूला के जरिए, सब कुछ वहां पे मैंने दिया हुआ है. व्हाट इज 5S फार्मूला, व्हाट इज S1, व्हाट इज S2, व्हाट इज S3, व्हाट इज S4, व्हाट इज S5, कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं, पांचों मैंने सारा वहां पे बताया हुआ है. अगर किसी को समझ नहीं आती है या इस एस्से को पढ़ने के बाद कंफ्यूज है तो गूगल से उस वीडियो को भी ले सकता है एंड वी कैन रिकॉल. So I'm going to write the introduction now according to the 5 sentences formula. क्या था 5 sentences formula? पहला सेंटेंस होगा टॉपिक और फोकस पे, दूसरा सेंटेंस होगा साइड 1 पे, तीसरा साइड 2 पे, एंड चौथा होगा आपकी ओपिनियन, और पांचवा होगा प्लान फॉर द एस्से. मैंने कहा था इन चार पॉइंट्स में से जो साइड 1 साइड 2 के बनाते हैं, एक पॉइंट इंट्रोडक्शन में ले जाएं, इम्पैक्ट ना लिखें, बिकॉज इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ पॉइंट को हाईलाइट करना है. एक्सप्लेनेशन में जाके हम उसके इम्पैक्ट्स और एग्जांपल्स की बात करेंगे. सो नाउ मैं लिखने जा रहा हूं, obesity has become, बन चुकी है, a significant, अच्छा खासा, challenge across the globe. Obesity has become a significant challenge across the globe, especially in the developed countries of, especially in the developed countries. Full stop. We have covered the topic, we have covered the focus, but do not take up the words of examiner. लोग कहते हैं पैराफ्रेजिंग मेथड से आप पहला सेंटेंस लिख लें, वो आपकी चॉइस है, मैंने समरी में समझाया, बट आई वुड लाइक आप खुद लिखें, एंड दिस सेंटेंस शुड कवर टॉपिक एंड फोकस बोथ ऑफ देम देयर. आगे चलिए, अब हम लिख रहे हैं साइड 1 रीजंस. इन न्यूमरस, बहुत सौ में, इन न्यूमरस, the primary reason or the primary cause behind the issue is excessive consumption, excessive consumption of fast food. तो हमने अपना एक पॉइंट यहाँ पे ला डाला. On the other hand, sentence number 3 side 2 का होगा. On the other hand, comma, the major solution to the problem, the major solution to the problem can be a physical, can be physical exertion, physical exertion to control the body weight. Full stop. To control the body weight. अब आपकी ओपिनियन, in my point of view, comma, public is less aware about the damages of the obesity, and
damages obesity, and they are not taking it seriously. Full stop. I will explain the both. I will explain the both angles or both sides. Both angles or both sides in detail later in this essay. Full stop. So I've completed the introduction. I've told you as 5 से चलेंगे 80 words पे पहुंच जाएगा introduction and we are at 81 words. So I'm marking 80. Okay. अब हम आ रहे हैं पैराग्राफ नंबर 2 पे एंड पैराग्राफ नंबर 2 होगा एक्सप्लेनेशन फॉर साइड नंबर 1. यहाँ पे साइड नंबर 1 क्या है? प्रॉब्लम्स. तो हमने 4 प्रॉब्लम्स के रीजंस को यहाँ पे लिखा था. हम इन्हीं को आगे लेके चलेंगे. मैंने बताया था जब भी आप शुरू करेंगे हम कहाँ से शुरू करेंगे? टू इनिशिएट विद. अब इस टेम्पलेट को भी याद रखेंगे. सर ने समझाया कहाँ से शुरू करेंगे पैराग्राफ? टू इनिशिएट विद and name the side 1. To initiate with and then name side 1. Name side 1. Okay. To initiate with the reasons behind the obesity. To initiate with the reasons behind obesity. Comma. It is important to understand. It is important to understand that the huge intake of fast food raises the level of unburned calories in human system, leading to fatness problem. Fatness problem. जब मैं लिख चुकूंगा फिर अब लिख चुकूंगा तो फिर मैं टेम्पलेट को रेड कर दूंगा ताकि आपको याद रहे कि ये हर ऐसे में सेम रहेगा. ठीक है जी. अनबर्न्ड कैलोरीज इन ह्यूमन सिस्टम लीडिंग टू फैटनेस प्रॉब्लम. सर ने कहा था 4 आइडियाज 4 इंपैक्ट 2 एग्जांपल्स होनी चाहिए एक साइड की. अब इस पैराग्राफ के अंदर 4 आइडियाज भी होंगे 4 इंपैक्ट भी 2 एग्जांपल्स. 2 एग्जांपल. फॉर एन एग्जांपल comma French fries burgers and French fries burgers and the beverages. Beverages. Full stop. Okay, so I've given the example of the fast food. For now, it is also noticeable that second point लेके आना. It is also noticeable that मैंने सारे addition words खुद करवाए हैं जी vocabulary में. Eating ready to eat cooked food. Okay, noticeable that population in rich countries enjoy ready-made cooked foods, ready-made cooked food in more quantities. Full stop. Same is the reason. इनफैक्ट को leading to के बजाय अलग सेंटेंस में लिख रहा हूं. Same becomes the reason. The same becomes the reason behind climbing, बढ़ते हुए body sizes. Okay, full stop. Example. For instance, मिसाल के तौर पे KFC
McDonald's, McDonald's and Subways. McDonald's and Subways. So these all are the examples, McDonald's and the Subways. Example भी आ गए. Adding to it, तीसरा idea. Adding to it, come on. तीसरा idea क्या है? Poor eating habits. Adding to it, poor eating habits contribute to an unhealthy lifestyle. Example, such as eating without a plan and even out of guidance of a professional nutrition. Professional nutrition, full stop. Professional nutrition, full stop. Okay, so now, finally, आखिरी point आ गया चौथा. Finally, lack of exercise, lack of inclusion of exercise in life is another dominating fact behind rising heavy bulks in population. Okay, so now we have did what? Another life is another dominating fact behind rising heavy bulks in the population. तो हमने साइड वन को 4 आइडियाज कंप्लीट कर. सर ने कहा था कि जब आप साइड वन को 4 आइडियाज और 2 एग्जांपल्स के साथ लिखेंगे, दिस विल टर्न आउट 120 वर्ड्स इंशाल्लाह, एंड दीज आर एग्जैक्टली 120 वर्ड्स. मूव अहेड. अब हम जा रहे हैं सॉल्यूशंस की तरफ. हेडिंग टुवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 3. हेडिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस. कम. Heading towards the solutions. Come on. The vital remedy. Solution yani. The vital remedy is control upon the intake of fast food. This will be supportive to regulate sugar level in the body and will definitely curtail, कम करेगी the weight. Full stop. Second idea, हमने क्या लिखा था? Reduction in the fast food consumption. Furthermore, the cooked food must be avoided. This initiative can
help in can help in regularizing regularizing the calories level and hence the weight. Full stop. मोर ओवर तीसरा आइडिया आ गया जी साइड 2 का. मोर ओवर एक्सरसाइज, recurring exercise can be very productive to eliminate huge structures in human like regular example आ गई, regular brisk walk, jogging and joining a gym. Full stop. Joining a gym. Full stop. Lastly, सबसे आखिर पे, lastly, हमने क्या लिखा? Government initiatives. Lastly, the government of the country should take a step to spread general information relating to बुरे adverse impacts of obesity on person's life. This activity will also be beneficial for creating a hurdle, रुकावट in the way of obesity. 4 आइडियाज, 4 इंपैक्ट्स हो गए साइड 2 के. सर ने कहा था साइड 2 के 4 आइडिया, 4 इंपैक्ट 100 तक लेके जाएंगे हमारे पैराग्राफ पे, एंड दीज आर 111, सो 110. अब आगे कंक्लूजन पे. सर ने कहा था अगेन 5S फार्मूला यूज करेंगे. पहला सेंटेंस जो मैंने लिखवाया था, कंक्लूडिंग the topic in my personal perspective, the prime reason behind obesity is the lack of exercises in life, और ना भी comma डाले, full stop. However, now last sentence, 5th one. However, the government's promotion of healthy activities
to avoid negativities of obesity can also be very fruitful. So now, primary reason है lack of exercise और government का initiative जो है ना, government's initiative for the promotion of the healthy activities to avoid negativities of the obesity can also be very fruitful. So in this way मैंने बताया था जब लिखेंगे आप conclusion, this will be around 35 words. यहाँ पे 36 है, so I'm pasting 35. So what is your total words of essay? These are 80 plus these are 120 plus these are 110 plus these are 35, and this is what I've made. 200, 310, 345 words are in front of you. Okay, so now see how the template works. The sentences which I'm marking cannot be worked under the template, cannot be covered under the template. They will be black. Okay, so which can be used as a template in numerous. The primary reason behind the issue is, so introduction mein, this can be used as a template sentence. On the other hand, the major solution to the problem is, अब अगर problem solution ऐसे होगा तो यही template रहेगा. मैं हर ऐसे का template अलग से बनाता हूँ. Can be, ये red words are the templates. कोई भी ऐसे लिख रहे होंगे, अभी आप दूसरा ऐसे लिखेंगे जो क्लास के अंदर, declining quality of life, the same template will you will be using. Okay, in my point of view, I will explain the both sides in detail. So reds are the template words. To initiate with, name side one. Template words. It is important to understand that template words. For an example, template words. It is also noticeable that template words. Adding to it, template words. Finally, template word. Heading towards the solutions, template word. The vital remedy to control upon, vital remedy is the template word. Furthermore, template, moreover, template. Lastly, template. Concluding the topic in my personal perspective, template. However, templates. So these all words will remain as such in almost every essay, and you will be just keep changing the ideas in the according to the changing essay type in your own practice. Problem and solutions essay. Solution essay. Class template. So now this will be sent by एक जनरल टेम्पलेट भी बनाऊंगा, बनाया हुआ है, वो एंड पे जाके दूंगा ताकि आप लोग टेम्पलेट्स की आदत ना डालें. अभी जो मैंने ये आपको ये डॉक्यूमेंट है ये भिजवा रहा हूँ. जैसे ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, आप इस डॉक्यूमेंट को देख के इसी पैटर्न पे अगला वाला एसे है, दैट इज व्हाट डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द बिग सिटीज. In some countries, the quality of life in the larger cities is declining. What is the topic? It is the quality of life. आगे चलें जी. Declining quality of life rather. And focus क्या है? Larger cities. Focus क्या है? Larger cities. What do you think why this is happening? It is side number one. ऐसा क्यों हो रहा है? It is side number one. And what can be the measures taken to stop it? क्या किया जा सकता है इसको रोकने के वास्ते? This is the side number two. So अभी आप अपनी क्लास के अंदर इसको अपनी क्लास के अंदर you will not leave the class. You will write the essay जो मैंने अभी हाईलाइट किया है on the same pattern बस Azishan has given. आपको ये essay पहुंच गया है. This essay will be with you over 1 minute. ये अगले 1 मिनट में आपके ग्रुप के ऊपर डिस्पैच हो जाएगा. डिस्पैच हो चुका समझे.
So this is being dispatched. ये dispatch हो रहा है. ये dispatch हो रहा है. And that is dispatched. तो ये आपको dispatch हो गया है. Problem and solution essay. You are requested to please look into the essay and then solve the essay according to what I have done. मेरा ऐसे सामने रख के अपना लिख के सेम पैसे मुझे वापस भिजवाए. I will be very obliged. I'm stopping recording. If there is any question, I'm very happy to answer.